Hi everyone, welcome back to the channel, guys. So with SEBI Grade A notification getting postponed, now there is a different angle to it. Earlier you were actually in a scarcity of time, but I think now you would have ample amount of time. जो एक महीना भी हमें एक्स्ट्रा मिल जाएगा ना, उसमें हम बहुत कुछ अच्छे से कवर कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें रिवाइज कर सकते हैं. In my opinion, if I talk about phase 2, I think it will not happen बिफोर मिड जुलाई. ठीक है, अगर जल्दी से जल्दी भी हुआ तो जुलाई के मिड में हो सकता है, बिकॉज उन्होंने नोटिफिकेशन पोस्टपोन किया है. तो आई डोंट थिंक देयर वुड बी एनी फर्दर कम्युनिकेशन फॉर द नेक्स्ट 15-20 डेज, और उसके बाद उतना टाइम रहेगा कि जुलाई में ही एग्जाम होगा. तो 3 महीने हमारे पास इज द मिनिमम वी हैव. बट इन दोज 3 मंथ्स आई थिंक what matters is, obviously you would have to do hard work, but it has to be guided. It has to be with proper strategy. अगर हम उस हार्डवर्क को सही स्ट्रैटेजी से करेंगे, इट विल इवेंचुअली टर्न इनटू द स्मार्ट वर्क वी हैव ऑलवेज बीन टॉकिंग अबाउट. तो अगले 3 महीने में मैं आपको कुछ 3 रूल्स बताऊंगा जो आपको बहुत ध्यान रखना है. एंड मोस्ट ऑफ द पीपल व्हेन दे आर टू मच एनग्रॉस्ड इनटू कवरिंग द सिलेबस, नो प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, दे फॉरगेट अबाउट दीज रूल्स. तो ये रूल्स ध्यान से समझना. And in case you already know it and you are not giving importance to them, please give importance to them. ये आपका career define करने वाले हैं. Now coming to the first rule is about, now try to understand, even if you read say 3-4 hours daily, in the next say 100 days you would be reading about 400 hours, right? This is the minimum you would be spending, and you would be slogging also. बट ट्रस्ट मी, योर करियर इज नॉट डिफाइंड ओनली बाय व्हाट यू स्टडी. मतलब आपने जो 400 घंटे पढ़ा है वही सिर्फ डिफाइन नहीं करेगा कि आप सेलेक्ट होंगे या ना नहीं होंगे. बिकॉज इन द एंड इट विल ऑल बॉयल डाउन टू दोज 40 मिनट्स. जो पेपर 2 के 40 मिनट्स हैं जिसमें आपको 50 क्वेश्चंस करने हैं, दिस इज समथिंग दैट विल डिफाइन योर करियर. सो 400 घंटे में जो नॉलेज ली है वो एक तरफ है, but how you are able to apply and execute that knowledge within a limited time of 40 minutes where you would be required to do 50 questions is a different ball game altogether. तो सिर्फ नॉलेज पे मत रिलाई करना. नॉलेज इज नॉट समथिंग दैट इज सफिशिएंट. इट्स रिक्वायर्ड बट इट इज नॉट समथिंग सफिशिएंट. मेरे हिसाब से आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट देने चाहिए. 50 मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा है, मैं बोल रहा हूँ, हमारे कोर्स में भी इतने नहीं है. But try to arrange from wherever you can. The most number of mock tests should be one of the priority list, one of the priority item in your list. तो एक तो ये चीज करो. दूसरा, mock test के अलावा I want you to solve as many MCQs, say 5000 MCQs on paper 2. Now this will not only help you to get a feel of solving questions in the exam where you can handle time management and anxiety, बट ट्रस्ट मी, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं द वेरी स्टैंडर्ड एट टाइम्स. मतलब 50 में से आई थिंक 30 क्वेश्चंस इतने स्टैंडर्ड होंगे कि वो बहुत सारी बुक्स के अंदर ही मिलेंगे आपको. सो दीज स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, आई थिंक यू विल हैव अ बेटर चांस टू कवर देम इफ यू सॉल्व दीज 5000 एमसीक्यूज. ठीक है, कहाँ से करें? एक एडुटैप का भी सोर्स है, बट आप ICAI चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाएं, जितने चैप्टर्स हैं उनके एमसीक्यूज करें जो आपसे सिलेबस से रिलेटेड है. ठीक है, ICAI कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाएं. इंटरनेट पे जो भी चैप्टर आपने पढ़ा है उसके एमसीक्यूज सर्च करें. It will take you some time to find that what are the best websites where you are getting quality questions, but once you get to know the quality websites, you can just search on them. It will save a lot of your time. तो ये दो चीजें आपको जरूर करनी है. सिर्फ पढ़ाई 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 करने से कुछ नहीं होगा. जब वहां पे एक अलग ही माहौल होगा, एग्जाम में 40 मिनट का प्रेशर होगा, उसके लिए भी वी हैव टू प्रिपेयर. सो दिस इज द फर्स्ट रूल जो आपको याद रखना है. और ये हमारी भी एक टेस्ट सीरीज है, सेबी ग्रेड ए 2024 टेस्ट सीरीज फॉर फेज 1+2, वेयर यू कैन गेट लॉट ऑफ क्वेश्चंस. इसमें आई थिंक राइट नाउ देयर आर 10,000 MCQs for both phase 1 and phase 2. So if you are doing self preparation, I think this is something that you will need to judge how much you are prepared. ठीक है. The second rule, now coming out of the second rule, again this is known by everyone. I am not telling you something new, but you are just ignoring it. You are just ignoring it on the pretext टाइम नहीं है, बाद में कर लूंगा, इंपॉर्टेंट नहीं है. बट ट्रस्ट मी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश. Maybe
Maybe you are underestimating the importance of this, saying कि यार इसका वेटेज तो 1/3 ही है. बट ट्रस्ट मी, स्टिपनी होती है ना कार की, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगती है, बट जब पंचर होता है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है. आई जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल. आपको एक एवरेज स्कोर जो टारगेट करना है एग्जाम में, दैट इज 70%. ठीक है. अब सपोज कीजिए पेपर 2 में यू आर टारगेटिंग 70, इन पेपर 1 यू विल ऑल्सो टारगेट 70, देन दीज विल बी स्केल्ड आउट. 2/3 of 70 would be 46. 2/3, oh sorry, 1/3, because this is paper 1 English of 70 would be 23.33, and this total becomes 70. So if you score 70 in both these subjects, the overall percentage that you get after scaling is also 70. But अभी पेपर 2 थोड़ा मुश्किल आ गया. सपोज कीजिए पेपर 2 थोड़ा मुश्किल आ गया एंड योर स्कोर डिप्स फ्रॉम 70 to 65. Just an assumption. So 2/3 of this becomes 43 of 65. Now to cover up this 5 marks, loss of 5 marks that you have incurred, because instead of scoring 70, you are scoring 65. To cover up these 5 marks, आपको यहाँ पे 10 मार्क्स ज्यादा लेने पड़ेंगे, बिकॉज इसका वेटेज हाफ है, 1/3 है, इसका 2/3 है. तो यहां पे अगर हम 5 नंबर का लॉस खा रहे हैं इन पेपर 2, इट मींस आई हैव टू इंक्रीज माय स्कोर बाय 10 इन डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश. तभी जाके इसका 1/3 26 बनेगा एंड दिस टोटल विल बिकम 70. सो even if you score good in paper 2 but not in paper 1, that is descriptive English, you will not reach this figure of 70. And this paper 1 becomes even more important, because अगर आपके 2-3 मार्क्स पेपर 2 में कम आते हैं, तो वो पेपर 1 में आपको इंप्रूव करने पड़ेंगे, और वहां पे आपको डबल स्कोर करना पड़ेगा फॉर एवरी 1 मार्क you would have lost in paper 2. So again, this is very very important. Do not just ignore it. कैसे करना है, कब करना है, we have made lot of videos, but करना है. इस वीडियो में मैं यही बोल रहा हूँ, every alternate day practice on your descriptive English. If you have time, maybe on each day. This is something very very crucial, very very crucial. Do not ignore it. मैंने देखा है लोगों के 75 आते हैं पेपर 1 में और 55 रह जाते हैं पेपर 2 में. ठीक है, सॉरी उल्टा बोल गया मैं. 75 आते हैं पेपर 2 में और 55 रह जाते हैं पेपर 1 में. एंड in spite of doing very well in paper 2, right, and just now go everything, you make everything go for a toss in paper 1 by just scoring 55. जो सीट आपके बिल्कुल हाथ में थी वो चली जाती है. एंड द थर्ड रूल दैट आई वांट टू टेल यू इज के आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, थ्योरेटिकल हैं, टेक्निकल हैं, so please do not read them in a random manner unless and until you are covering them through some live classes or through some teachers. Then you can even do subjects in any order as they are teaching you. But if you are doing self preparation, I think it is best to have a sequence of theoretical subject, plus technical subject. So I think the best order you can follow, again only if you are doing self preparation, मैनेजमेंट और कॉस्टिंग कर लीजिए, कंपनी लॉ और कमर्स एंड अकाउंट्स कर लीजिए, बिकॉज कंपनी लॉ इज टोटली फैक्चुअल एंड कमर्स एंड अकाउंट्स इज वेरी टेक्निकल. देन फाइनेंस, it looks like technical, but again it is factual and theoretical with respect to what is asked in SEBI Grade A, and economics is very technical. So I think this kind of combination or sequence works best for you. There can be another sequence also. In our live classes also, we are also teaching a different sequence, but their teachers are hand holding you. They are basically making you understand everything wherever you are stuck. So there it should not be a problem. But if you are doing self preparation, I think you should follow such kind of sequence. इससे क्या होगा, एक तो आपको मतलब एकदम लोड नहीं आएगा आपके ऊपर. 2 टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ लेंगे तो बहुत लोड आ जाएगा एंड यू विल ट्राई टू गिव अप, राइट. इट विल काइंड ऑफ गिव मोटिवेशन टू यू, बिकॉज आपका जो एक सिलेबस है वो थोड़ा थोड़ा कवर होता रहेगा, थोड़ा टेक्निकल, थोड़ा थ्योरेटिकल. सो यू विल गेट दैट मोटिवेशन, एंड दैट मोटिवेशन विल एक्चुअली ड्राइव यू टू बिकम even better version of you when you go to the next set of blocks. तो इस चीज पे भी बहुत ध्यान रखना है. बड़ा सिंपल रूल है, बट लोग यही गलती करते हैं when they start reading all the 6 subjects or any 3 subjects which are not suitable to be studied together. या तो बहुत आसान उठा लिए या बहुत मुश्किल उठा लिए,
ऐसा मत कीजिएगा, राइट? बिकॉज इट्स योर चांस एंड मे बी द लास्ट चांस यू हैव टू क्रैक सेबी ग्रेड ए। और चौथी चीज, एक बोनस रूल बता रहा हूं। देखिए, पेपर क्रैक करना बहुत मुश्किल है, अगर आप 25 घंटे भी पढ़ेंगे तब भी मुश्किल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन लॉट ऑफ फैक्टर्स, बट वन थिंग दैट you can instill in yourself and which can give you lot of relief is belief. Believe in yourself. It might not do any wonders, but not believing in yourself will surely harm you. It will surely harm your chances. दुनिया में जब भी कुछ बड़ा हुआ है ना, जब भी कुछ बड़ा हुआ है, देयर हैज बीन अ बिलीफ बिहाइंड दैट, एंड दैट बिलीफ comes from a vision, and your vision, your goal is to become officer in SEBI Grade A. So I want all of you who are watching this video, guys, just look at me. Just look at me. You are there. You are there. You are born to be successful in life. Just believe in yourself. If not SEBI Grade A, somewhere else. But do not give up. Do not give up. This is your year. This is your time. If you work hard, you will land up somewhere good. Just believe in yourself. I want all of you to type here in the comment section that yes, sir, I will believe in myself. And just do not only type, implement it. What? Believe in yourself. So with that, I take your leave. And before I take your leave, I want to tell you that in case you are an aspirant for SEBI Grade A, you're starting now, this guidebook has been curated by us. It has a lot of information about SEBI as an organization, salary, departments, promotions, hierarchy, and about SEBI Grade A exam. It will help you get some of the best knowledge in terms of previous year papers, detailed book list you will get, and detailed syllabus. I mean, after decoding the previous year papers, we have come out with the detailed syllabus that is not even mentioned in the notification. And you can download this guidebook for free. We are not charging anything. There is a link in the description of this video. Just click on that link and download this guidebook. And these are our courses for SEBI Grade A. We have gold package, we have silver package for SEBI Grade A. Like, gold package is both for phase 1 and phase 2, whereas silver package is mainly for phase 2. But since there are common papers between phase 1 and phase 2, that is paper 2, right, of phase 2 is also there in paper 2 of phase 1, so that you can prepare even for phase 1. So we have gold and silver package, right? And then we have SEBI Grade A live crash course. Many of the live classes have already been conducted, but there are many more to go. You can watch the recorded version of the earlier live classes that have been conducted. So this live crash course is helping you prepare for both phase 1 and phase 2. This is a very good thing. I think you are able to complete your chapters in a daily manner, in a targeted manner. You are able to resolve your doubts daily with your teachers, and there is a hand holding, there is a schedule which you can follow, right? Because otherwise it becomes very hazy as in how to approach and how to be kind of, मतलब अपने आप पे हम कैसे अकाउंटेबिलिटी लाएं, ये बहुत मुश्किल होता है जो इस लाइव क्रैश कोर्स से आ जाता है. सो विद दैट आई टेक योर लीव. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.